Hello everyone there. Welcome back. I am Shweta and we are studying chapter database concept. In last lecture, we have seen how to create tables and queries practically. Today also we are going to see how to create forms and reports practically. So, let us start one by one. So, see, this is the screen. If you remember, we have created in the last lecture Model College database. Okay, so we are going to work on this database itself. In this database only, I am going to create forms and reports. So, double click on this database. Yes. Now, before starting forms, you should know how many tables are there in your database. See, here are two tables, customers and student. If you remember, I have created tables using both design view and wizard, right? Similarly, I have created different queries using design view as well as wizard. So, likewise, today also we are going to create forms and reports by using design view as well as wizard. So, before starting forms, now on which table or on which query you want to create form, that first you have to decide. So, always remember that we can create forms depending upon tables as well as queries. But in queries, this queries comes from what? Tables. क्वेरीज हम लोग ने कहाँ से बनाए हैं? टेबल्स के ऊपर से. क्वेरीज डायरेक्टली बनाए क्या? नहीं, टेबल्स के ऊपर से ही हम लोग ने क्वेरीज बनाए हैं. इसलिए एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको फॉर्म्स क्वेरीज के लिए बनाना है, क्वेरीज के जो भी यहाँ पे है इसमें से ही हम लोग फॉर्म्स बना सकते हैं. तो अगर आपने क्वेरीज लिया फॉर्म्स के लिए तो आप कभी भी न्यू रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते. ओके, इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट forms using queries, then you cannot enter new records in queries because queries they are made from tables. ओके क्योंकि क्वेरीज टेबल से बनते हैं तो हम लोग क्वेरीज में डायरेक्टली न्यू रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते हैं. इफ यू वांट टू एंटर न्यू रिकॉर्ड देन फॉर दैट पर्पज यू शुड यूज टेबल्स. ओके, सिर्फ टेबल्स ही यूज करेंगे फॉर्म्स में, दैट टाइम ओनली यू कैन एंटर न्यू रिकॉर्ड्स. So, always remember this point in your mind. Now, we want to create table. So, you have to decide on which table you want to create the form. Okay. So, I want to create form for this table, student table. Okay. So, let us see how many fields are there because that many fields we have to include in our form also. जितने fields आपके table में रहेंगे उतने ही fields आपको आपके form में भी रखने पड़ेंगे. यहाँ पे कितने fields है? रोल नंबर, name, address, mobile. So there are 4 fields. So this 4th field should be included in your form as well. Okay? और records देखो कितने हैं? 5 records है. Now अगर आपको नए records enter करने तो that also we can do using forms. So let us see how we can do that. Okay? Now click on forms. See, there are 2 ways to create the forms, design view and wizard. Okay, but I would recommend you to use wizard. ओके मैं आपको ये बताती हूँ कि हमेशा मोस्ट प्रॉब्ली आप विजार्ड ही यूज करके देखो क्योंकि विजार्ड क्या होता है? इन विजार्ड एवरीथिंग इज रेडीमेड. ओके, we do not want to do any type of a settings and all that things. Already everything is ready made, so with the help of wizard we can create the forms very easily. Okay, but if you want to create forms using design view, then it might take time because we are going to do everything manually. But then also I am going to show you both the ways. Whatever you like, you can do that. Okay, so let us start. First we will create form in design view. So double click on this design view. It takes time to open. So see, this is the form in design view. Now see, can you see anything on the screen? No, only you can see toolbar, menu bar and all that things are there. Okay, so what we have to do, we have to create everything in this design view. So first I am going to create, now you want to create
व्हाट फॉर्म ऑफ स्टूडेंट, तो हमको स्टूडेंट एंट्री का फॉर्म बनाना है. ओके, ऑलरेडी हमारे टेबल में स्टूडेंट का डेटा था और फिर डेटा अगर एंटर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट एंट्री का फॉर्म बनाएंगे. फॉर विच college? For model college. I am going to prepare it for model college. You can write anything. Okay, now here I will write label has model college. उसके लिए मुझे यहाँ पे label use करना पड़ेगा. So see this is a label option. Click on this. Once you click, you have to drag it like this. Okay, after dragging, you have to right click and go on control properties. Click here. Now in front of label you have to write the name, whatever you want to write. Now I want model college, so what I will write? Model college. Okay, now you can change the font, you can change the size. Here only you can see this is font. So if you want to change the size of this, then you want to click on this browse button. Now see, these are the different font. So whatever font you want, you can select any font from this one. Then if you want bold, you can select bold. Then change the size also if you want. I'm going to select 26. Okay. Okay. Now next, alignment. I want model college should be in center. So what I will do? I will select alignment as center. Then background color. If you want to give color, then choose the background color, any color, whatever you want, you can choose that color. Then once it is done, now say this is border without frame. Here you are having 3D look. Then you are also have flat. So see how it looks. Flat is like this. So whatever you want, you can choose from these three options. I'm going to pick 3D look. Okay, I'm going to select 3D look. Now that's it for me. If you want to do any more things, you can select that things. Now I will close this option. Okay, this is our model college. Okay, so this is the label of model college. Now next what I will write? I will write student entry form. ये form हम लोग student entry के लिए बना रहे हैं, तो I will write student entry form. उसके लिए भी मुझे label लेना पड़ेगा. Okay, एक label लेके student entry form लिखेंगे. Okay, so here I am going to write student entry form. Right click this. Again control properties. Label के सामने आपको क्या लिखना है? Student data entry form. Okay, then इसका भी साइज अगर आपको चेंज करना है तो आप इसका भी साइज चेंज कर सकते हो. फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर सकते हो. So here also I am going to change the size of this. I am going to keep it as 22. Okay, then okay. Then again I want the alignment also. I will choose alignment here, center. Then background color. If you want background color, give background color. That's it for me. Okay, then now I will just drag this so that it will look properly. Okay. So it is up to you how designing, whatever designing you want to do, that is up to you how you want to do it. Okay, now we are going to enter the fields. For that also I am going to use what? Labels. Okay, कौन से field थे आपके टेबल में, आपको याद है तो देखो क्या था. कितने fields थे? 4 fields. So I am going to create how many fields? 4 fields, 4 labels. Okay, so I am going to select 4 labels. One for name, one for roll number, one for address, one for mobile number. Okay, now we will just right click this. Again go to control properties. Control properties में जाने के बाद आपको क्या करना है? Label field roll number लिखना है. यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो. Label में आपको जो भी नाम देना है आप दे सकते हो. If you want to increase the size, you can do that too. If you want to decrease the size, that also you can do. Suppose you want by default it is 9 point. If you want 15, we will write it 15. Okay, then click on OK. Close. Then next one. Again same thing. अभी क्या आएगा आपका? रोल नंबर के बाद आपको क्या चाहिए? कौन सा फील्ड चाहिए आपको? Suppose you want name.
आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। आई एम राइटिंग स्टूडेंट नेम, टेबल में क्या था, सिर्फ नेम था। ओके, नाउ इसका भी साइज सेम करना पड़ेगा, सब सेम दिखने चाहिए, इसलिए इसका भी साइज हमको 15 करना पड़ेगा। ओके 15। ओके, close this. So you cannot see this, so you have to drag it. Okay, now next field, what was next field? Address. So I will write here what? Address. ADDRESS, address. Again change the size. What was the size? 15. You want all field should look same, of same size, so हम लोग सबको 15 same ही size देने वाले हैं यहाँ पे. Okay, then close this. Now last field is what? Mobile number. So label के सामने क्या लिखना है फिर से? Mobile number. Okay, again what size? 15. तो चलो साइज भी चेंज कर लेते हैं. फॉन्ट साइज क्या आएगा? 15. Okay, that's okay. Now we have done. Just drag this. Okay, now see, in front of this you want whatever data of you have written in the table that should get displayed. आपको इसके सामने रोल नंबर के सामने रोल नंबर आना चाहिए, स्टूडेंट नेम के सामने नाम आना चाहिए, एड्रेस के सामने एड्रेस, मोबाइल नंबर के सामने मोबाइल नंबर आना चाहिए. लेकिन जो हमने टेबल में किया है वो आने के लिए आपको इसके सामने भी तो कुछ रखना पड़ेगा. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज व्हाट? टेक्स्ट बॉक्स. क्या यूज करना है उसके लिए? टेक्स्ट बॉक्स. तो क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स. Then place text box in front of this. Okay, now see, now what is the question? Question is that कि वो टेबल का डेटा इसमें आएगा कैसे? जो हम लोग ने टेबल लिया है उसका डेटा इसमें आएगा कैसे? For that, what we have to do? We have to connect that table with any of the label. वो टेबल को पहले अपने फॉर्म के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ही ये फॉर्म में आपके टेबल्स के कंटेंट्स आ सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई कैन कनेक्ट दिस ऑल्सो लेबल और वी कैन कनेक्ट दिस ऑल्सो लेबल. आपको जो भी लेबल कनेक्ट करना है टेबल के साथ आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ सपोज ये डेटा एंट्री का जो लेबल है इसको ही हम लोग कनेक्ट करते हैं टेबल के साथ. सो फॉर दैट वी हैव टू राइट क्लिक. ओके, राइट क्लिक करना है, देन यू हैव टू क्लिक form properties. Remember, for connecting this label with table you have to click on form properties, not control properties, form properties. Okay, click on form properties. See here you can see general, data and events. 3 tabs are there. From that we have to select data. कौन सा टैब आपको सेलेक्ट करना है? डेटा टैब. ओके, आफ्टर सेलेक्टिंग डेटा टैब here you can see content type. Now see, this also depends upon the version of LibreOffice. If you are having LibreOffice recent one, then you might get here data source. किसी किसी को यहाँ पे data source दिखाई देगा, तो और यहाँ पे टेबल का नाम. ओके, सो वॉट एवर इज देयर, बट यू हैव टू जस्ट सी दैट वेदर इट कंटेन्स टेबल्स और नॉट. तो सी इन दिस कंटेंट टाइप you can see table, query and SQL command. From this you want to create, you are creating form for what? Table or query? You are creating form for table, so select table. आप टेबल के लिए फॉर्म बना रहे हैं ना, so select table. Now in this content you are going to select the table. Okay, टेबल में भी 2 tables थे, one was customers table and one was student table. From this 2 tables, which table we are going to use? We are using student table, so select student table. Okay, once you're done you close this. Okay, now our table has been connected with this label. Now you can select this text box and right click this text box. अभी इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल प्रॉपर्टीज में ही जाना है. याद रखना, जब हमने टेबल को कनेक्ट करना था हमको लेवल के साथ, दैट टाइम मैंने कंट्रोल प्रॉपर्टीज नहीं, मैंने फॉर्म प्रॉपर्टीज यूज किया था. लेकिन अभी रोल नंबर के सामने मुझे रोल नंबर आना चाहिए, तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट कंट्रोल properties. In control properties also you are having 3 tabs: general, data and events.
From this you have to select what? Data. Now see, you can see your data field is there. So यहाँ पे एरो पे क्लिक करो, फिर हमारे टेबल में जो भी फील्ड्स थे, स्टूडेंट टेबल में हमारे पास कौन से फील्ड थे? रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल। तो हमें यहाँ पे रोल नंबर को सेलेक्ट किया, तो रोल नंबर के सामने वाले इसमें रोल नंबर ही आना चाहिए कि नाम आना चाहिए? रोल नंबर आना चाहिए, इसलिए हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे? रोल नंबर को। ओके, देन क्लोज दिस। सिमिलरली फॉर स्टूडेंट नेम यू वांट टू सेलेक्ट व्हाट? डेटा फील्ड। कौन सा आएगा फील्ड यहाँ पे? एड्रेस लिखूँ, एड्रेस सेलेक्ट करेंगे कि नेम सेलेक्ट करेंगे? नेम, राइट। देन फॉर एड्रेस, control properties, then again which field you are going to select now? Address. Then for mobile number you are going to select, sorry, form properties. By default I selected form properties, it is control properties. Data field, mobile. Okay, now all these text boxes, they have been connected to our table fields. ये जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस है सारे टेबल फील्ड्स के साथ हम लोगों ने कनेक्ट कर दिए हैं. नाउ once you are done, now if you want to make if you want to keep all these things in a rectangular box, then we can place that rectangular box over here. Sorry. Okay. Okay, now change the background color. If you don't want this color, then change the color of this. Okay, now see, now we have done. Okay, now we have finished everything. Now we want to see the form. अभी हमें कंटेंट्स भी दिखने चाहिए जो अपने टेबल में थे, रिकॉर्ड्स जो अपने टेबल में थे वो भी दिखने चाहिए, एंड इवन यू कैन एंटर न्यू रिकॉर्ड्स. हाउ? दैट वी विल सी. सी हियर you can see this rectangular, triangular. Okay, this is a design mode. What is this? This is a design mode. So click on this design mode. Now we have done our designing part, and we have to just click on this. Yes, can you see the record? Record has came here. Whatever record was there in your table, जो भी आपके टेबल में records था वो सब यहाँ पे दिख रहा है. Roll number 1, name of roll number 1 is Aarti, she stays in Kalyan, and this is her mobile number. Similarly, if you want to see the second record, just click on the next record. See your roll number 2, Priya, Thane, and mobile number. Similarly, for third record, click on that, then fourth record, then fifth record. Sixth is not there, only 5 records are there. Okay, now suppose if you want to enter new record, then what you have to do? If you want to enter new record, see here, you can see this plus sign. So you have to click this. Okay, new record. Now you can enter new record. 5 roll numbers तक हमारे पास record थे. Now you can enter 6th record. 6th record, suppose the name is Diya. So I am entering here Diya name. Address, suppose she is staying in Kalyan. Then mobile number, suppose mobile number is this. Okay, एक record हम लोग ने add कर दिया. और record add करने हैं तो और records हम लोग add कर सकते हैं. Roll number 7, then tab. Now write any name like Charlene. I'm writing Charlene. Then write where she stays. She stays in Kalyan or Thane. Suppose she stays in Thane. Then mobile number. Okay, like this. Now I have done entering the records. Okay, now let us see whether this whatever new records we have entered, that means that changes has been done in our table or not. टेबल में उसका चेंजेस हुआ है क्या देखना है अपन को. टेबल में कितने रिकॉर्ड थे? 5 रिकॉर्ड्स. ओके, और हम लोग ने अभी कितने रिकॉर्ड्स ऐड किए? 2 रिकॉर्ड्स. मीन्स रोल नंबर 6 एंड रोल नंबर 7 हम लोग ने फॉर्म्स के थ्रू ऐड किए. नए एंट्री हुआ, डेटा एंट्री. अपने कॉलेज में 2 जनों ने एडमिशन लिया तो उसको 6 रोल नंबर मिला और दूसरे को 7 रोल नंबर मिला. ओके, तो ये रिकॉर्ड्स अपने टेबल में अपडेट होते हैं क्या, ये भी देखना है हमको. ओके, सो नाउ वी आर डन विद दिस. सो आई विल क्लोज दिस फॉर्म. So it is going to ask you whether you want to save the changes or not. Yes, अगर आपने no किया तो आपके टेबल में ये 2 रिकॉर्ड्स नहीं दिखेंगे. अगर आपने save yes किया तो आपको ये 2 रिकॉर्ड्स दिखने वाले हैं. Okay, your changes will be lost if you do not save them. Save. फॉर्म का नाम देना है. Now suppose मैंने फॉर्म का नाम दिया student what details. Student details.
Okay, this is a form name. Save it. Okay, see here, you can see the form, student detail. Just click here, you can see that form also. ओके फॉर्म दिख रहा है आपको. तो अगर आपको फिर से रिकॉर्ड्स देखने हैं, चेक करने हैं, तो आप चेक करो कितने रिकॉर्ड्स है, 6-7 तक. नाउ इफ यू वांट टू एंटर न्यू रिकॉर्ड, अभी भी हम लोग न्यू रिकॉर्ड्स एंटर कर सकते हैं, बिकॉज फॉर्म इज व्हाट, फॉर्म इज यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर डेटा एंट्री. ओके, इट इज यूज्ड टू एंटर डेटा फ्रॉम द यूजर. फॉर्म का यूज क्या होता है, टू एंटर डेटा फ्रॉम बाय द यूजर. सो यू कैन एंटर न्यू रिकॉर्ड्स ऑल्सो. ओके, सो क्लोज दिस. ओके, अभी हमें क्या देखना है कि टेबल में नए रिकॉर्ड जो लिखे हैं हम लोग ने फॉर्म से, वो ऐड हुए कि नहीं. ओके, लेट अस सी. देखो ऐड हो गया, 6 रोल नंबर एंड 7 रोल नंबर, दिया एंड शर्लिन. आपको दिख रहा है अभी फॉर्म में, टेबल में आ गया वो. सो इस तरह से जब आप कोई भी फॉर्म ऑनलाइन फिल करते हैं, दैट टाइम वॉट एवर फॉर्म यू डू एंट्री फॉर्म, ओके, जो भी फॉर्म में एंट्री करते हैं वो फॉर्म आप जिसका भी डेटाबेस है उसके डेटाबेस में वो जाके सेव होता है. लाइक दिस ईच एंड एवरी डे द रिकॉर्ड्स गेट अपडेटेड. ओके, उनके रिकॉर्ड्स हमेशा अपडेट होते रहते हैं इन डेटाबेस. Okay, now this was how to create forms using design view. Now let us see how to create form using wizard. Now wizard से हम लोग देखेंगे. Go in forms, we will click on this, use wizard to create form. Okay, so this is the wizard. See, form wizard. Now here you are going to get everything ready made. Okay, all ready made things will be there. See, first is field selection, means which fields you want from which table or queries. आपको फॉर्म क्वेरीज के ऊपर बनाना है या फॉर्म्स के ऊपर बनाना है, डिपेंड्स ऑन दैट. ओके, नाउ सपोज आई हैव ऑलरेडी डन टेबल, स्टूडेंट टेबल. नाउ वी विल क्रिएट फॉर्म यूजिंग कस्टमर टेबल. चलो, सो आई एम क्रिएटिंग कस्टमर. Now if you want all the fields, select all the fields. Okay, otherwise you can select those fields whichever you want to select. Okay, but I am going to select all the fields क्योंकि मुझे नया डेटा एंट्री करना है, तो मुझे सारे fields में डेटा एंट्री चाहिए. That's why I am going to select all fields. Okay, then set up a subform. If you want subform for this, then you have to do this one, but this we don't want, so we are not going to use this. We will arrange the controls. Controls कैसे arrange करते हैं, देखो अभी सब ऐसे दिख रहे हैं, मीन्स सबका by default ये selection है. This one is the selection, how it will look like this. But if you want to change the style, then we can change that also. अगर आपको सब ऐसे एक के नीचे एक चाहिए, then for that we are going to use this one. Otherwise this one is also there and this one is also there. So whatever field you like, you can select that. So I would like to select this first one. Okay, so I am selecting this. Okay, whatever you want, you can select that. So I am selecting this. So you can align left, you can align right. Right side means what will happen, whatever you write, so this has been changed, this has been came to the right side. Align left means it will be in the left side. Okay, then set data entry. Now see here, you have to you have to be careful while selecting these options. The form is to be used for entering new data only. Existing data will not be displayed. What is the meaning of this? इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने ये select किया तो क्या होगा कि आपको अगर सिर्फ नया data entry चाहिए, then only you can do that thing. But you cannot see the records in your table. जो आपके records already है, जो अभी 7 records आपके table में दिख रहे हैं या 3 records, ये कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है वो पहले हम लोग देखेंगे, बाद में ये इसमें नया एंट्री कर सकते हैं. ओके, मींस वी विल कम टू नो दैट वेदर चेंजेस हैज बीन अपडेटेड और नॉट. ओके, सो इसका मतलब क्या है, जो रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हमारे टेबल में रहेंगे वो नहीं देखने को मिलेंगे, हम लोग सिर्फ नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं. लेकिन इसका मतलब क्या है, इट इज यूज टू डिस्प्ले ऑल द डेटा. आपको पूरा डेटा दिखेगा, आपका खुद का टेबल का डेटा भी दिखेगा और जो नया एंट्री करोगे वो भी मिलेगा. नाउ देयर आर 3 ऑप्शंस. Do not allow modification of existing data. Means what? जो भी डेटा ऑलरेडी आपके टेबल में है उसको आपको मॉडिफाई नहीं करना है. ओके, किसी को वो अलाउ नहीं करना चाहिए, कोई दूसरे का डेटा मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, तो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन. सेकेंडली, इफ यू डू नॉट वांट टू अलाउ डिलीशन ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा, किसी को डिलीट करने का भी राइट नहीं देना है, तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा.
डू नॉट अलाउ एडिशन ऑफ न्यू डेटा। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, आप नया रिकॉर्ड्स एंटर नहीं कर पाओगे। बट आई डो नॉट वांट टू अलाउ एनीबडी टू डू एनी मॉडिफिकेशंस, आई डो नॉट वांट टू अलाउ एनीबडी टू डू डिलीशन वर्क, only addition of new data is allowed. Okay, then next one, apply styles. Styles means what? This color is by default baggy color. Whatever other colors you want to choose, you can select that option, whatever color you want. Okay, so you want select any one. Then next is set name, means once you are done, now you can write the name for this. So I am writing customers details. Okay, now remember here, work with the form means only whatever is there that only you can see, but आपको modify करना है form को, so always select this option, modify the form. Then at last click on the finish option. Okay, now before seeing this form, ये form को देखने से पहले हमको customer के record देखने हैं ना, कितने हैं. So first we will go in tables, we will see how many records are there in customers. See, only 3 records are there, 101, 102, 103. Okay, now let us go again back to the form. Where was that? Okay, this one. Again go in the, click on this design mode. Now once you click on the design mode, you can see the records. Okay, so see, this is the first record of first name is Aryan. Then we will click on the next record. See, this is Ramesh. Then third record is Preeti. How many records were there? 3 records. Okay, now if you want to enter new record, click on this plus. Now I am going to enter here 4, then tab, customer ID 104, then name, write any name here, Harshal, then okay, the spelling, okay, then here again last name, suppose he is Sharma. Then department, suppose he is working in sales department, then I will write sales. Okay, then lastly address, wherever he is staying, suppose he is staying in Thane. Okay, then again I will enter one more record. Okay, ID 5, 105, then name is suppose Rakesh. Suppose Rakesh is the name, then last name is what you can say, any surname, I am not getting any surname, suppose Ghati, I don't know, I am just writing it randomly, anything. Okay, then he is also working in HR department. Then address is suppose he is staying in Diva. Okay, so this is all. Now I have did again 2 more records. Okay, now my entering record has been finished. So if I want to close the form, I will close the form, save it and close it. Okay, otherwise if you are not saving it, then also while closing it is going to ask you whether you want to save or not. So now yes. Now see here, 2 forms I have created. One, this student detail was created in design view and this customer detail was created using wizard. Now first let us see in the table whether the changes has been updated or not. Customer table में already 3 records थे, अब देखेंगे कि 5 आ गया. Yes, Harshal and Rakesh has been added. So this is the way how you can create forms depending upon the tables. Okay, so I hope this forms is clear to you. Okay, now let us move towards reports. Okay, now similarly report also you can create in 2 ways, design view and wizard. But again here also I would recommend you to use wizard because wizard is very easy way to create the reports and forms. It is already built in, already everything is ready made, so there is no efforts to prepare everything. Okay, now but we are going to see reports in both ways. So first we will see in design view. Click on this design view. Okay, so it is already by default your table has been selected as customer, that's why it is showing you the report based on that table only. Okay, customer table हम लोग ने select किया था, that's why the report also
it is selecting for customer only. Okay, so I want details in ये जो फिल्स है ये कहाँ पे आना चाहिए, डिटेल्स में. सो जो भी फिल्स आपको चाहिए आप ऐड करो लाइकवाइज. ओके, फर्स्ट मुझे एड्रेस नहीं चाहिए. आई विल जस्ट रिमूव दिस एड्रेस. आई विल रिमूव द एड्रेस. फर्स्ट एड्रेस नहीं आना चाहिए, पहले कस्टमर का आईडी वगैरह आना चाहिए. ओके, so first customer ID, then I want first name, then I want last name, then I want address. Okay, then department. मैंने ID नहीं लिया है. Okay, I don't want ID in report. That's it. Then close this. Okay, then now we will just increase the size of this so that we can place it properly. I will just increase the height of this. Now we can place it properly. Okay, likewise address, okay, then last name, select it, then first name, okay, here the gap is more, so we have to adjust that. See, by creating in design view there is a manual work. उससे अच्छा रहता है विजार्ड में करोगे सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो वो अच्छा रहता है, राइट. ये सब देखो कैसे आ रहा है, सब कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है. Go select this. Okay, once we are done, see now here also the alignment, see here it has been okay. Now it is perfect. Okay, now in page header, if you want to give any heading for your report, then that heading should be given in this page header. Okay, select this page header first, then select the label. Here is a label, select the label option and select the heading for this. Now in this label here you can write the label. Suppose you are creating it report for, no, this is not model college, I think this is a customers table. So suppose this is a report of customers. So what I will write? I will write report of customers. Okay, then this is the label. Then you also, if I want alignment center, then I will select center. Okay, then vertical alignment middle. Okay, okay, so this is how we have done. Then pot, okay, this is the, if you want to increase the size, we will increase the size. Okay, then if you want to underline it, underline it. Okay, that's it. If you want to give color to the background, just select the color, whatever color you want to give, just give that color. Any color, whatever color you want, you just select that. I want to just show you, that's why I'm selecting like this. Page footer means what? Whatever at last, whatever you want to write, you can write that thing. Okay, if you want to write, then write, otherwise there is no need to write also. It is not compulsory. Okay, this is done. Now what will happen? Yes, I have created all these things. Now I will just close the report. I will save the report. I will close the report. It is asking me the report name, what report name you want to give. So I will just write cust report. Okay, save it. Okay, now see, once you are done, you want to see the report. आपको report भी तो दिखना चाहिए कैसा दिखता है. So what I will do, I will click on this. See, this one is this. Can you see this symbol, execute report? Yes, click on this execute report.
See, this is the report. See, your customer 1 is there, then details of customer 1, then customer 2 is there, right? Likewise, customer 3 is there. Only 3 customers were there? No, 4 is also there. 5 is there. Okay, so this 5 all report came. For customers report is there, ready. This is the read only document. In this document you cannot edit anything or you cannot delete anything. You can just print. मैंने आपको पहले भी सिखाया था report क्या होता है, what is the use of report. It can be only printed. We cannot edit or delete this report. Okay, so you can just print this report but you cannot edit or delete this report. Okay, now close this. Now this was how to create report in design view. देखो यहाँ पे report आ गया, आपको देखना है फिर से तो you can click on this and you can see the report also. So see, this is the report. Once again you can see this report. Okay, now what we will do, we will create report in using wizard. Okay, so let us see how it is getting created. Okay, here again field selection. What type of a field you want? Now depend upon query or on tables, depending upon anything you can create the reports also. Okay, so I am going to create report depending upon the students table. Student table के ऊपर हम लोग report बनाएंगे. Okay, what fields you want? I want all the fields to be displayed. Then labeling the fields. What is the labeling fields? Labeling fields means जो भी आपके report में दिखने वाला है उस field का नाम आपको किस तरह से चाहिए. जैसे मैंने roll number को यहाँ पे space दिया. I am giving space. Okay, then in name I am writing student name. Label में मुझे student name ऐसा दिखना चाहिए. Okay, then address, mobile number, like this. This changes I have done. Then grouping. अगर आपको grouping चाहिए, what is this grouping actually? Grouping means अगर suppose ये means कल्याण में कितने लोग रहते हैं या पुणे में सॉरी पुणे तो हम लोगों ने नहीं लिखा है लेकिन कल्याण, डोंबिवली, थाने इस तरह से हम लोगों ने स्टूडेंट्स के एड्रेस लिखे थे. ओके, देन अगर आपको ग्रुप करना है एड्रेस वाइज कौन से प्लेस में कौन कितने स्टूडेंट्स रह रहे हैं, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आपको ग्रुपिंग यूज करना है. ओके, यू सेलेक्ट ग्रुपिंग डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एड्रेस. आपको ग्रुपिंग किसके ऊपर करना है? एड्रेस के ऊपर. ओके, देन सॉर्ट ऑप्शंस. अभी सॉर्ट ऑप्शंस भी एड्रेस के ऊपर ही आने वाला है क्योंकि हम लोग ग्रुप किसके वाइज करने वाले हैं? एड्रेस के वाइज. ओके, सो आपको असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग. व्हाट इज असेंडिंग? फ्रॉम ए टू जेड. एंड व्हाट इज डिसेंडिंग? फ्रॉम जेड टू व्हाट? जेड टू ए. ओके, सो हम लोग असेंडिंग ही रखेंगे. देन चूज द लेआउट. लेआउट मीन्स व्हाट? सी हाउ you want tabular form, you want singular. I will show you background. It is going to change. See, in which way you want that you can select. Columnar 2 columns. This is 2 columns, then 3 columns, then in blocks. मीन्स एड्रेस पहले आएगा क्योंकि हम लोग एड्रेस वाइज ग्रुप करने वाले, फिर बाकी उनका डिटेल इस तरह से दिखेगा तो हम लोग ऐसे रखेंगे. ओके, इन ब्लॉक्स लेबल्स लेफ्ट. लेफ्ट मीन्स वो उनके सामने आएगा और अबो मीन्स उनका नीचे आएगा. ओके, सो वी विल write in this way or this way, whatever you prefer to, you can do it. Okay, so I will select this option. Okay, then create report. हो गया, अभी report create करो. Okay, create report now. So let us create report now. Finish it. What do you want to give the title for the report? Student report now. Student report. Okay, then click on finish. See here how it looks. Landscape, it is in landscape. Address, Dadar. Dadar, where in Dadar who is staying? Roll number 4 is staying. Name is Fatima. Okay, then address Kalyan. Kalyan, roll number 6 and 1. 6 और 1 कहाँ पे रह रहे हैं? कल्याण के अंदर. कल्याण में दिया और आरती रहते हैं. ओके, देन इन एड्रेस थाने. थाने में कौन कौन रहता है? रोल नंबर 7, 5, 3, 2. ओके, सो दिस ऑल स्टूडेंट्स दे आर स्टेइंग वेयर? इन थाने. सो सी, वी हैव सॉर्टेड एड्रेस वाइज. हम लोग ने, आप बोलोगे मैडम यहाँ पे तो डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है.
मिस पहले ऊपर 7 आ रहा है, फिर 5 5 3 2, सो वी हैव नॉट सॉर्टेड दिस, वी आर सॉर्टिंग डिपेंडिंग ऑन दिस एड्रेस ओनली. सो एड्रेस आप देखोगे तो बराबर ABCD के वाइज आ रहा है. पहले दादर आया, फिर कल्याण आया, फिर थाने आया. ओके, ABCD आप देखोगे तो पहले D आता है, फिर K आता है, फिर T आता है, राइट. तो हम लोग ने इसके वाइज सॉर्ट किया था, ये अंदर का हम लोग ने सॉर्टिंग नहीं किया था. ओके, सो दिस ऑल्सो यू कैन सॉर्ट इट. अगर आपको ये भी रोल नंबर भी सॉर्टेड चाहिए तो दैट ऑल्सो यू कैन डू इट. ओके, सो दिस इज द रिपोर्ट ऑफ द, what you can say, this is a report of the student. What address wise आपको देखना है कैसे कौन कहाँ पे रह रहा है. तो this is the report. Okay, so I hope this is clear to you. Okay, so see here, student report is ready. Just double click on this and see how your answer looks. See, this is the way how it looks. Okay, here the mobile number was not entered, so it is not going to display. Okay, this only you can take the print out. इसका आप से print out ले सकते हो, आप इसमें कुछ edit और delete नहीं कर सकते हो. Okay, this is the report. So I hope that this forms and reports is clear to you. Now see, this was just how to create tables, how to create queries, forms and reports. हम लोग ने सिर्फ यहाँ पे यही देखा है कि फॉर्म्स, टेबल्स, रिपोर्ट्स और क्वेरीज कैसे क्रिएट किया जाता है. लेकिन जब आपका प्रैक्टिकल सेशन मीन्स वॉट एवर इज प्रैक्टिकल इज देयर फॉर यू इन एग्जाम के लिए यू आर हैविंग थ्योरी पार्ट, यू आर हैविंग प्रैक्टिकल पार्ट, राइट. So whatever is there in your practical, depending upon that question, we are going to solve it. Okay, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, आपका क्वेरी या आपके टेबल्स आपको कितने बनाने हैं क्वेश्चन में दिया रहेगा. ओके, ऑलरेडी इन योर क्वेश्चन इट विल बी मेंशन, क्रिएट दिस टेबल, क्रिएट दिस क्वेरी, create forms or reports, whatever is mentioned in your question, that all things we are going to do. But when after finishing database chapter, see, once we are finishing our database chapter, then after that I am going to take practical session of HTML as well as database. So भी जो भी आपके database में practicals रहेंगे या फिर HTML में रहेंगे वो सब मैं लेने वाली हूँ after finishing this chapter. Okay, so this is all for today. So see you in the next lecture. Till then, take care, be happy and enjoy learning.